So I would like to invite Dr. Mohammad Irfan Hashmat, who is a consultant neurologist working in Dow University of Health Sciences. He also had a training and fellowship in movement disorder. So I request Dr. Irfan Hashmat to share his slides and start his talk. Dr. Irfan. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। डॉक्टर मालिक, कैन यू हियर मी? जी जी आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फोरम एंड इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली पार्किंसन डिजीज की डिस्कशन आज होगी। जो मेरा टॉपिक है, जैसे डॉक्टर मालिक ने अभी अर्ज किया कि ये हनीमून पीरियड के खत्म होने के बाद का पीरियड है, तो अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये चीजें हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है आज के एडवांस पार्किंसन डिजीज क्या होती है, फिर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी लिस्ट। लाइक आई सेड के मोटर फ्लक्चुएशंस और डिस्काइनेसियस होते हैं, लेकिन नॉन मोटर पार्ट भी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे आता है, वेदर इट्स बिकॉज ऑफ द डिजीज और बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन। और फिर इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई वाज गोइंग थ्रू लिटरेचर के एडवांस पार्किंसन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो एडवांस पार्किंसन है, दैट सेड टू बी एस्टैब्लिश्ड आफ्टर years of disease when there is sufficient disability despite levodopa therapy। पेशेंट ले रहा होता है मेडिकेशन और स्टिल उसको अब वो रिस्पॉन्सेस नहीं मिलते, तो वी कैन एस्टैब्लिश कि एडवांस पार्किंसन डिजीज है। इसके अलावा सफिशिएंट लॉस पोस्चरल रिफ्लेक्सेस में आता है, जिसकी वजह से मल्टीपल फिनोमेना हमें मिलते हैं। फ्रीजिंग फिनोमेना अगर पेशेंट्स के अंदर है तो ये भी एक फीचर है एडवांस पार्किंसन डिजीज का, अलॉन्ग विद पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। एंड ऑल्सो अगर पेशेंट्स के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक आपकी आवाज डॉक्टर इरफान नहीं आ रही। हेलो जी जी, आपकी स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही डॉक्टर। जी सर, ऑलराइट, मैं इसको क्लिक करेक्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी हो रही है, इसको फुल स्क्रीन कर दें। ऑलराइट, सो जो एडवांस पार्किंसन डिजीज के फीचर्स हैं वो इन सेड फीचर्स में से कोई एक फीचर भी होता है तो हम उसको लेबल कर सकते हैं कि पेशेंट्स अब एडवांस पार्किंसन डिजीज के फेस में आ गए हैं। एंड यूजुअली एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो हम लोग पेशेंट को फेस करते हैं, यूजुअली पेशेंट्स जीपीज या मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ट्रीटमेंट ले रहा होता है, और जब वो हनीमून पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद फिर वेयरिंग ऑफ फिनोमेना या जो भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं आफ्टर लाइक 3 to 5 years ऑफ द डिजीज, वो फिर हम लोग को वो देखनी है और वो फिर पेशेंट्स को डील करना है उसके हवाले से। राइट, सो कॉम्प्लिकेशंस को अभी हम डिवाइड कर देते हैं मोटर कॉम्प्लिकेशंस में और नॉन मोटर कॉम्प्लिकेशंस में, और इसको हम सीक्वेंस वाइज जो है ना डिस्कस करेंगे। राइट, एक आर्टिकल अभी रिसेंटली मैंने देखा था जिसमें मोटर कॉम्प्लिकेशंस की प्रिडिक्शन पे उन्होंने फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं, तो मैं उसको समराइज कर देता हूँ कि देयर आर सर्टेन डिजीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ मोटर कॉम्प्लिकेशंस, और उसके अलावा ड्रग फैक्टर्स हैं एंड पेशेंट फैक्टर्स। तो जो डिजीज फैक्टर हैं वो ये कि नॉन मोटर स्केल अगर हाई होगा पेशेंट्स का तो दे हैव एडिशनल बर्डन ऑन द मोटर स्केल। इसके अलावा एंजाइटी और लो मूड्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद मोटर कॉम्प्लिकेशंस, एंड आल्सो ट्रेमर डोमिनेंट पेशेंट जो होते हैं उनमें लेसर कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को देखने को मिलती है एज कंपेयर टू दोज विद द ब्रेडिकाइनेसिया एसोसिएटेड पेशेंट्स। नाउ द ड्रग फैक्टर इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कॉम्प्लिकेशंस। लीवोडोपा, as you all know, is a strong predictor for dyskinesias, and favorable response
is associated with motor complication as well. तो ज्यादातर motor complications उन लोगों में देखी गई हैं जिन पे response levodopa का अच्छा आया है, क्योंकि आगे जाके यही फिर dyskinesias develop करने में एक key role play करता है. And apart from patient's factor, younger age onset होती है Parkinson की, that is associated with increased motor complication risk irrespective of the disease duration. And education भी इस article में highlight की गई है as a risk for increased motor fluctuation. Right. So motor complications को जब हम divide करते हैं तो fluctuations को separately हम discuss करेंगे और dyskinesias को separately discuss करेंगे. So what is actually the motor fluctuations? So when actually you are taking levodopa preparation, it actually improves the motor symptoms during the initial years of disease. But later on, because of the progressive loss of midbrain dopaminergic neurons, patient eventually develop variation in the clinical motor response, which is actually termed as motor fluctuations. तो पेशेंट्स आपको जब आके ट्रांसलेट करेगा वो यही बताएगा कि इनिशियली अगर वो सिनामेट ले रहा है तो उसका बहुत मैजिकल इम्प्रूवमेंट आती थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम अब वो उसका रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं होगा. अब उसमें फर्दर आपको अप्रिशिएट करना है कि एक्चुअली मोटर फ्लक्चुएशंस का या रिस्पॉन्स ना आने का पेशेंट के उसमें क्या ट्रांसलेशन बनती है. So here is the list of different motor fluctuations. There is slow wearing off, there are sudden transient freezings, there is sudden off, there are random off, super off is also important motor fluctuations, and there is also a delayed on. ये हम अब one by one sequentially आगे discuss कर लेंगे. And there is episodic failure to the response of the drug, and there are days when we have a weak response. And there is off dystonia, and there is some fluctuating response to the drug in relation to the meals. Now, if you talk about the pathophysiology of on and off phenomena, is actually when patients are taking levodopa, there is fluctuation in the plasma level of the levodopa that are actually responsible for on and off. When you take the drug, the levels are high, and as the drug degraded in the blood, the patient having off state. So there is sudden off, which is actually due to the sudden in transition desensitization of the dopa receptors. And जो important चीज ये है कि इसके अंदर हम लोगों को इसको differentiate करना है बाकी सारी चीजों के साथ, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट में और स्ट्रेटेजी में चेंजेस आती हैं जो कि इम्प्लीमेंट होगा आगे. So talking about wearing off, ये सबसे common phenomena है. Initially when patient start taking a drug, there is an adequate response, but with passage of time it is seen that there is adequate dosage of levodopa which is not functioning, or it is functioning for less than 4 hours. तो either उसका dose की increment करनी पड़ेगी या उसकी जो frequency है वो बढ़ानी पड़ेगी. ये wearing off phenomena कहलाता है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज इसको अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं विद मेडिकेशन. सो sudden off is also important motor fluctuation in which there is deep state of Parkinsonism that develop over minutes, rather tens of minutes, with the dose of the levodopa. And there are certain situations that you can handle with it, like continuous apomorphine injections, which are solution, but they are not very much realistic in our part of the world. So random off is also a type of off in which there is a sudden off that appear unrelated to the timing of the last dose of the levodopa. So important ये है कि जितनी motor fluctuations अब तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे, इनमें पेशेंट के साथ बैठ के पूछना जरूरी है कि पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस की रिलेशनशिप क्या होती है दवाई की टाइमिंग से, और ये चीज हम लोगों को ये जरूर गाइड कर देगी कि ये इधर ऑन स्टेट में ये फ्लक्चुएशन आ रही है या ये ऑफ स्टेट में आ रही है. ऑलराइट, in further classifying off, there is super off, where when there is off state which is more severe
to the baseline untreated Parkinsonism of the patients, and it actually appears either at the end of the on period or immediately after the dose of the levodopa. Another complication that we gonna see in patients with Parkinson disease in late stages is delayed on, and it established when the levodopa is taking longer than 30 minutes after being swallowed for the kick in. And these patients have a problem in getting an on with the first dose, and that is usually in the morning. And still mechanism is not clear, but it usually seen probably in the late stages. And it can be treated with either taking the larger dose of levodopa as the first dose, or swallow it in the crush form and dissolve in vitamin juice or orange juice or fizzy drink. Now, another complication that we see is like a dose failure, and that occurs when levodopa fail to initiate its usual kick response. And this is usually happen when either the drug is taken with meals or with some relation to the meal, but the exact phenomena is still unclear. And like I have said initially कि जो different approaches हैं, तो एक approach जो इसको treat करने की है, that is to use the apomorphine injection, which is still not available in our part of the state. Alright, एक और complications patients लेके आते हैं, that is weak response at the end of the day, and that usually patient come up with the response is less as the day passes, and still the mechanism for the poor response at the end of the day might relate to the plasma level of the levodopa with each subsequent dose. So इसमें जो चीज हम try कर सकते हैं वो ये कि उनकी later on जो disease drug की dose है वो बढ़ा दी जाए and see the response. Furthermore, जो हमारे complications में dystonia भी एक complications होती है, और इसको ये establish करना जरूरी है कि ये off state dystonia है या ये on state dystonia है, because दोनों की treatment में फर्क होता है. And जो patients है तो ज़्यादातर जो dystonia की complain करते हैं वो morning dystonia की complain करते हैं. Right. One more complication that we see is the response of levodopa that is variate with the meals, and since levodopa is absorbed from the proximal small intestine, so it's quite logical that the response should be variate with the meals. So variation can be seen with the full meal with delayed gastric emptying that result in delayed and weaker response, or it is associated with high protein meals. So the treatment usually advised to those patients is having non-protein meals at the breakfast and lunch, and make up for the lag by having higher meals at the dinner. That will usually be effective. And if the patient goes off at night when he or she cannot be can afford to an extent the off state, the patient can best be adjusted to. Right. So motor complication में हम लोगों ने इस part तक motor fluctuations को cover किया, and there are quite many to address. Now the dyskinesias, which are very important, very troublesome with the patients, and it is very in fact injurious at some point that patient may come up with fractures or fall with dyskinesias. So actually dyskinesias are usually levodopa induced, and they are referred to the involuntary adventitious movement that usually occur after prolonged treatment with the levodopa in patients with Parkinson disease. And this term dyskinesia is usually applied with any involuntary movements such as chorea, balism, dystonia, tics, or myoclonus. So we'll be discussing three important levodopa dyskinesias. And before moving to address the description, जो हमें सबसे important चीज है वो ये है कि patients से जो उनका onset है वो जरूर पूछना है कि वो दवाई लेने के कितनी देर बाद इस तरह की abnormal movements उनको आती हैं, because ये चीज diagnosis में help करेगी, और फिर later on उनकी जो levodopa induced dyskinesias हैं, whether they are peak dyskinesias, diphasic dyskinesias,
or off-period dyskinesia or dystonia, they can easily be addressed later on. So they are usually not happening. जो peak dose dyskinesias हैं, they usually not happen in untreated patients and rarely seen with the DUPA agonist monotherapy. So they are likely addressed or associated with patients who have taken levodopa carbidopa combination. And actually the peak dose dyskinesia, like I said, patient will come up with the sequence related to the drugs. So these dyskinesia is usually occurring in after taking the drug, and the dose of the drug or the serum level are high in the blood. These dyskinesia are appeared then. एक और डाइफेजिक डिस्काइनेसियाज होते हैं जो ऑन स्टेट में भी होते हैं और ऑफ स्टेट में भी होते हैं. जो स्टार्ट जो ऑफ स्टेट का होता है उसमें होते हैं एंड देन यू टेक द ड्रग, एंड जब वो ऑफ स्टेट की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये डाइफेजिक डिस्काइनेसियाज कहलाते हैं. ऑलराइट, इन ऑफ पीरियड डिस्काइनेसियाज एक्चुअली यूजुअली इसकी कॉमन प्रेजेंटेशन जो है वो डिस्टोनिया की फॉर्म में है, जो मॉर्निंग डिस्टोनिया. तो ये डिस्काइनेसियास में भी कवर होता है और ये मोटर फ्लक्चुएशंस में भी होता है. एंड यूजुअली इसकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो लोअर लिम्स के साथ ज्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू द अपर लिम्स, एंड दे आर टिपिकली सीन इन द मॉर्निंग बिफोर द फर्स्ट डोज ऑफ द levodopa. So it can be called as akinesia, early morning off, or dystonia. They are very painful dystonic cramps. और इसको देखना भी जरूरी है, इसको एस्टेब्लिश करना भी जरूरी है कि पेशेंट में है, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो मसल क्रैम्प्स करके ट्रीट हो रहे होते हैं और दे आर एक्चुअली अंडर रिकॉग्नाइज्ड फॉर लाइक मॉर्निंग डिस्टोनियास. ये एक पिक्चर मुझे मिली थी. तो अगर पेशेंट आपको इस तरह की कोई पिक्चर दिखाए या वो आप जब उसको ऑफ स्टेट में देखें, इस तरह की चीज आपको मिल रही है, तो always think for early morning dystonia or dystonia related to the off state. All right, एक और complications है जो सबसे ज़्यादा important है कि इसको recognize किया जाए और address किया जाए, and that is freezing or motor blocks. जो motor blocks हैं is actually a form of sudden akinesia, and they are mostly seen in legs when the patient is walking. तो motor blocks आपको चलते हुए मिलेंगे और ज़्यादातर जो patients motor block के साथ हैं वो usually आपको जो है वो उनमें fall की tendency ज़्यादा होती है. तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इसकी diagnosis के साथ patient को भी educate करना ज़रूरी है. बहुत सारे ये जो अब हम complications की बात कर रहे हैं, the easy thing I find with my patients is कि अगर उनमें थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो उनको अगर ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सिखा दिया जाए तो वो बेहतर तौर पे आपको फॉलो अप से गाइड कर सकते हैं कि कब वेयरिंग ऑफ इस्टेब्लिश हो रही है और कब दूसरी मोटर कॉम्प्लिकेशंस अगर उनको लग रहा है वो मिलती हैं. राइट, फॉल्स in Parkinson can be a complications and can be because of the drug or can be because of other factor. So fall in Parkinson is actually multifactorial, and usually half to two-third patients are come up with fall in Parkinson disease, and that you need to fix के fall की cause क्या है. अगर आप उस कॉज को इवेल्युएट कर लेंगे तो वो चीज एड्रेस हो जाएगी, वरना क्या होगा वो रिकरेंट फॉल के साथ चीजें जा रही होती हैं. तो रिस्क फैक्टर्स जो फॉल्स के हैं मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि ये डिस्कस करूं, बिकॉज अगर हमने पेशेंट्स को फॉल से बचा लिया या ये प्रिडिक्ट भी कर लिया कि पेशेंट इज गोइंग टू गेट हाई चांसेस ऑफ फॉल, तो हम उसको बहुत सारी सिग्निफिकेंट फ्रैक्चर्स और इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं. एंड एट टाइम्स इन ओल्ड एज यूजुअली हमारी कॉम्प्लिकेटेड पार्किंसन के पेशेंट्स 60 प्लस या 70 प्लस होते हैं, तो उनमें मोर्टेलिटी का भी एक कॉज जो है वो फॉल होता है कि हिप फ्रैक्चर हुआ, दे लेटर वेंट ऑन फॉर सर्जरी, सर्जरी डिड नॉट कम अप और वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करते हैं. तो फॉल्स में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का एक बहुत रिस्क फैक्टर है, डिप्रेशन, एंजाइटी. previous fall can also predict the further chances of the fall, and there are certain balance issues as well that are associated with degeneration of brain
because Parkinson disease is a neurodegenerative disorder, तो उसमें ये चीजें भी मिलती हैं. और all these things are related to decreased mobility of the patient. तो अगर हम falls को ठीक तरह address करें तो हम patient की mobility और functionality को बेहतर तौर पे address कर सकते हैं. Alright, important ये है कि fall को किस तरह से differentiate करें कि Parkinson disease का patient fall अगर करता है. तो अगर ये डायग्राम आप देखें तो इसके अंदर जो यूजुअली ओल्ड एज में लोग फॉल करते हैं तो उनके हैंड के फ्रैक्चर या एल्बो फ्रैक्चर ज्यादा होता है. पार्किंसन का जो पेशेंट फॉल होता है इट्स बिकॉज इट्स बेसिकली इन मोटर ब्लॉक और ऑफ स्टेट और रिजिडिटी. तो उसकी अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको आइडिया होगा कि उसका जो फॉल होगा वो यूजुअली हिप फ्रैक्चर और हेड के साथ वो फॉल ज्यादा देखे गए. सो बेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ फॉल इज एज इम्पोर्टेंट कि उसमें प्रीवियस हिस्ट्री जरूर पेशेंट से पूछें कि उनको फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा. डॉक्टर नबील ने बहुत डिटेल में नॉन मोटर सिम्टम्स को डिस्कस किया, लेकिन नॉन मोटर कॉम्प्लिकेशंस भी they are taken as the motor non-motor symptoms of Parkinson disease, and they are as much troublesome for the patient as like that of motor complications. तो इनको भी एड्रेस करना जरूरी है. ये एक लिस्ट है. आई एम नॉट गोइंग टू लाइक डिस्कस इन डिटेल. हैव अ लुक. These are the complications that we can in patients with advanced Parkinson disease, and they should also be aggressively managed, handled, and recognized. So the journal strategy that needs to handle the complication in advanced Parkinson disease is to ask the patient to have motor diary. उनसे पूछें कि किस तरह से वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं और किस तरह से वो मेडिकेशन से उनका रिलेशन बनता है. पेशेंट को एजुकेट किया जाए कि ऑन टाइम को किस तरह से बेहतरीन यूटिलाइज करें ताकि वो पेशेंट जो नॉन फंक्शन है उनकी फंक्शनैलिटी को बेहतर किया जाए. लाइक आई ऑलवेज discuss and emphasizes that identification and diagnosis of motor as well as non-motor complication is very much under recognized. So you need to have a detailed history with the patient, with the attendant, to come up with these basic idea of the complication. And management is actually not is something universal. It should be tailor-made to the patient's need and the falls that the patient is coming up with. Always ask the patient to have exercise, rest. Stress of the Parkinson disease patients because of the disease and because of the external factor should be managed, because these are also expose the patient to the complications.